Good morning, dear student. BCom semester 3 English medium. Dear students, in I would like to inform you that I will start your new subject post account, and in this subject I complete unit number 1, and then after I would start unit number 3. In our previous lectures, I would calculate 2 example, and now in this lectures I will calculate another 2 example. So friends, I humbly request, please you do practice at home. Friends, you can see on your screen example number 3. So now I read the information related to our example. Standard task during the day is fixed at 15 minutes. If a worker produces 15 units or more, he gets wage at 1.20 per unit, and a worker who produces less is paid at rupees 1 per unit. If A produces 20 units and B produces 40 units, what would they get under Taylor's different wage plan? So friends, our standard time is standard task is 15 units, okay, and if the workers produce 15 units or more, then he gets per unit 1.20 rupees, and if the workers produce less than 15 units, then he gets wages at rupees 1, okay. And in our example, A produced 20 units and B produced 40 units. So what would they get under the टेलर्स डिफरेंट पीस बेस्ड प्लान? फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए गुजराती भी रखा हुआ है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो टेलर का जो इक्वेशन है कि यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई हाई रेट एंड यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई लो रेट. फ्रेंड्स, यू कैन सी इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स आई explain all the equations for your kind informations. Once again I show the equations. The Taylor's different base rate system. So friends, you can see when the workers produce more units, the equation is unit production multiply high wage rate, and when the workers produce less units, so unit production multiply low wage rate. So we use this equation in our example number 3 and get the answer. Okay friends, so you can see here the calculation for workers A wage. Wage is equal to unit production multiply high wage rate, because A produced 20 units and it is more than our standard units. So A gets 24 rupees, and now B, the calculation of workers B wage, to B produce 40 units, it is less than our standard units, so he gets only 1 rupees per unit. So 40 multiplied 1 यानी कि 40 rupees. So friends, you can see here कि A produce more than units. So friends, and when this type of example asked in your university exams, in your internal exam, please you must be remind the equation of Taylor's different wage plan. Okay, now I will go to another example number 4. The following particulars apply to job standard time 50 hours, यानी कि standard time is 50 hours, time 40 hours, time taken 40 hours, material cost of a product is 150, factory cost rupees 300, factory overheads are recovered at rupees 1.50 per hour of actual time taken, calculate direct wages and rate of wage per hour under healthy plan. So friends, our standard time is 50 hours. The workers time taken 40 hours, and our material cost is 150, factory cost is 300, and our factory overheads we recovered per hour 1.50 rupees. Okay, and you must be find out direct wages and rate of wages per hour under the healthy plan. तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुजराती में वो आप देख लेना एक बार. तो सबसे पहले फर्स्ट
we note down our standard time. So our standard time is 50 hours. Time taken 40 hours, and per hour rate 150 is our factory overheads. So now factory overheads is equal to 40 multiply 1.50 यानी कि 60 rupees. Okay, so now we make the calculation. So first we find out per hour wage rate. So friends, so first we find out the per hour's wage rate. So friends, you can see here in this example we have total factory cost 300 rupees. Now we deduct the amount of material and factory overheads, then we get the answer of direct wages. So material 150 and factory 60. Then now the difference is direct wages is 90 rupees. Okay friends, now we get our first answer. Now we are going to on our another calculation, per hour wage rate. So friends, how to find out it under the Halsey plan? So first we find out the time save, how many hours we save the time during our task. So friends, save time is equal to 1/2 multiply total time saved. So friends, 1/2 multiply 10, because our standard time is 50 and time taken is 40, so we save the time is 20 and we get the bonus for 5 hours. Okay, so friends, total hours is 40 plus 5 यानी कि 45 hours. So per hour rate is 90 upon 45 is equal to 2 rupees. Means कि we pay 2 rupees per hour direct wages. Our direct wages is 90 rupees. So we pay per hour 2 rupees. So friends, we get our both the answers. You must do practice at home once and twice. Now we are going to our another example. The standard time for a particular job is 40 hours and actual time taken is, friends, 30 hours. Okay, basic wage rate is ₹8 and dearness allowance is 2 per hour. Calculate total wages and effective rate of wage per hour under Rowan plan. Bonus is calculated on basic plus DA rate of wage per hour. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड टाइम हमारा 40 आवर्स था और हमने कितने आवर्स लिए, 30 आवर्स, और पर हावर हमें कितना मिलता है, 8 रुपीज़, और 2 रुपीज़ क्या मिलता है हमारा, डेयरनेस अलाउंस मीन्स मोंगवारी भत्ता। अब आपको क्या करना है कि आपको रोवन प्लान के मुताबिक आपको यहाँ पे वेज रेट फाइंड आउट करना है और उसके कैलकुलेशन के लिए आपको जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा है उसको भी आपको प्लस करके आपको कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे गुजराती में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार देख लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी अर्निंग कितनी हुई अकॉर्डिंग बाय टू रोवन प्लान। तो अर्निंग इज इक्वल टाइम टेकन मल्टीप्लाई पर हावर रेट। तो हम कितने आवर्स लेते हैं, तो 30 आवर्स, और पर हावर में कितना मिलता है, 8, यानी कि टोटल हमारा अर्निंग कितना हुआ, 240। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो हमें पर आवर कितना मिलता है, 2 रुपीज़। तो 30 प्लस 30 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 60 रुपीज़, यानी कि हमारी टोटल अर्निंग कितनी हुई, 300 रुपीज़। अब बोनस की कैलकुलेशन करते हैं। तो बोनस इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम वेजेस मल्टीप्लाई टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउ, यानी कि हमें यहाँ पे एक्चुअल टाइम की जो वेजेस मिली है वो मल्टीप्लाई हमने जितना समय बचाया वो अपॉन हमें कितना टाइम मिला था, टोटल हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना था। तो 300 मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे 40 माइनस 30 यानी कि 10 आवर्स हमने यहाँ पे सेव की। तो 10 अपॉन 40 यानी कि पर आवर, यानी कि हमें बोनस कितना मिला, 75 रुपीज़। तो अब हमारी टोटल अर्निंग कितनी हुई, तो टोटल अर्निंग हो गई हमारी टाइम वेज प्लस बोनस इज इक्वल टू 300 प्लस 75 यानी कि 375। सो पर आवर रेट कितना हुआ, तो 375 अपॉन 30, सो इज इक्वल टू 12.50 रुपीज़। सो अकॉर्डिंग बाय द रोवन plan we pay per hour 12 rupees 50 paisa. Okay friends, I hope you understand both the examples and you do practice at home once, twice and 3 times, and then after if you have any doubt so please you send me the message, yeah, or pass the comments. If you like my videos, please
like, share and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.